Hi guys, welcome back to another video. मेरा नाम प्रगुन है and I am an AI automation strategist. Weirdly enough, मैंने ये वीडियो एक बारी पहले शूट करी थी. You can see YouTube test build 1. But sadly वो मेरे ड्राइव पे सेव हो नहीं पाई and for some reason ये मुझे फिर से शूट करनी पड़ रही है. So the purpose of this video today is to understand कि if we are new to n8n, then how we can learn to build new workflows and new AI automations. So the purpose of this series that I'm running, which is an n8n series, is कि जैसे जैसे मैं चीजें सीख रहा हूँ, जैसे जैसे I am implementing things for myself and my agency, मैं चाहता हूँ कि आप भी स्क्रैच से मेरे साथ वो सब सीखें. So probably if I learn something and मैं जैसे ही उसको सीखूंगा, my goal and my task is to share that knowledge with you guys so that आपके लिए भी easy हो जाए and you can also implement all this knowledge to your business, for your clients and for your agencies as well. So, yeah, the purpose of this video today is to create a basic workflow in n8n. This is an n8n workflow start page. So, how much banane kya wale hain, I can show you that. So, this is a basic वर्कफ्लो. हाउ डज दिस वर्क कि हम एक फॉर्म से सबमिशन लेंगे, फॉर्म से सबमिशन लगा के हम उससे कुछ कंडीशनल लॉजिक के साथ प्ले करेंगे एंड इफ इट सूट्स आर कंडीशनल लॉजिक, ये क्या करेगा, ये हमारे को एक मैसेज सेंड कर देगा एंड इफ इट डज नॉट सूट आर कंडीशनल लॉजिक देन वो नो ऑपरेशन साइड पे चला जाएगा. So this can be basic, but yes, this can be a very high leverage, high value automation for businesses because businesses के साथ usually क्या होता है whenever they are onboarding new clients, whenever they are attracting new people, जो leads होती हैं they come in and बहुत बारी ऐसा होता है that leads जो होती हैं वो irrelevant होती हैं and बहुत बारी हमें उन्हें कुछ certain criterias के ऊपर reject भी करना पड़ता है. So today I'm going to share that only. So what we'll do is we'll create a new workflow and then we can figure it out कि हमें ये कैसे basically build करना है. So what we can do is we can create a new workflow. आप लोगों ने देखा है कि I just created a new workflow. How this will work is basically this is the first step. So this is a module or a node जो भी आपको कहना है. You can click on this. And यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि ये वर्कफ्लो को क्या ट्रिगर करेगा. अब ट्रिगर करने का मतलब ये है कि हम कुछ वर्कफ्लो बना रहे हैं, हमको एआई ऑटोमेशन बना रहे हैं. सो देयर नीड्स टू बी अ स्टार्ट पॉइंट इन दैट एंड स्टार्ट पॉइंट को फिगर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज दैट स्टार्ट पॉइंट फॉर अस. यहाँ पे our start point is basically a form submission. So we'll find for a form submission. अब start points बहुत सारे हो सकते हैं. या तो हम उसे ट्रिगर मैनुअली करें या कुछ हम ऐप पे कुछ इवेंट हो तो करें, कोई वेब हुक हो, कुछ हो कहीं पे तो हम उससे ट्रिगर हो जाए या फिर ऑन अ स्केड्यूल ट्रिगर हो जाए कि वी वांटेड टू बी ट्रिगर्ड इन नेक्स्ट 5 मिनट्स और इन नेक्स्ट 10 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट. इस वेब हुक को कॉल करना है, जिससे कुछ हो सकता है क्या. एंड there are many other options. We can create a chat trigger. We can create multiple things. So जो भी आप सोच पा रहे हो उससे ज्यादा ही we can do. So what we want right now is a on form submission. On form submission पे जब हम क्लिक करते हैं, this gives us this page. What this actually means is कि यहाँ पे हमारे एक टेस्ट URL आ रही है. You can see authentication is none. We want the form title. So this is very important. We want a form title. So जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं उसके लिए एक टाइटल चूज करेंगे. So here the title can be YouTube build test form. And there can be a description as well. So lead data form. Probably we can write lead data only. उसके बाद we need to add elements because एक form को जब हमने create करा है, there needs to be elements. So this can be your name field and this has to be a text. So and this is a required field. Second can be your email ID. And this cannot be a text field because हमारे पास एक option होता है email का. This can also be a required field. Third can be anything. So you can think of anything. I'm creating a basic form right now. We can go to much more complex forms, but यहाँ पे अभी हम एक basic lead gen form की बात कर रहे हैं. So we can take phone number as well. So phone number is something we can add as well. This can be a number. This is also required. And the last field can be probably project start date, जहां से हम अपना conditional logic work करेंगे. This can be a date. Perfect. Once we have this, we can click on an execute step. जैसे ही हम execute step पे click करते हैं, you can see that we have the YouTube build test form and the description says that it's a lead data form. What we can do is we can fill it out. So I'll fill it out my details @company.com and I can add a fictitious number to it. And what we'll do is we'll choose 2 days from now. Perfect. What we'll do is we can click on submit. Once this is submitted, you can see the form has been submitted. एंड जैसे ही हमने यहाँ पे सबमिट किया देयर इज एन आउटपुट. सो ये क्या है अब मैं आपको बताता हूँ. जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया देयर इज एन आउटपुट हियर प्रेजेंट व्हिच मेंशंस दैट द नेम इज दिस, ईमेल आईडी इज दिस, फोन नंबर इज दिस, स्टार्ट डेट इज दिस, दिस इज व्हाट टाइम इट वाज सबमिटेड एट एंड दिस इज द फॉर्म मोड.
अब आपके पास डेटा देखने के तीन तरीके हैं. वन इज अ स्कीमा which is like this format. Other can be a table, which is a tabular format data, and the third is an JSON. JSON is basically a data जो ऐसे आपको दिखता है. There can be one item or a zero item or a one is to many item in JSON. JSON is something which the program is understanding. This is the tabular form and this is the schema form. यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है that यहाँ पे हम इस डेटा को पिन कर सकते हैं. So what we'll do is we'll pin this data. अब इस डेटा को पिन करने का मतलब क्या है? इस डेटा को पिन करने का बेसिकली मतलब ये है कि जब हम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बना रहे हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा डेटा के साथ प्ले कर रहे हैं और हम उसकी डीबगिंग कर रहे हैं, या वी वांट कि हम बार बार इस फॉर्म को फिल ना करें, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आस्क द सिस्टम टू पिन दिस डेटा. कि whenever we are debugging things in the future, whenever we are actually doing stuff in the future, what we can do is we can use this data to actually move ahead. हमें बार बार उसको फिल करने की जरूरत नहीं है. So what we can do now is we can go to our canvas and we can see that we have one data item here. Perfect. This is what we want. So now what we want is जैसे ही एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा, there is a conditional logic to it. And what this conditional logic means is कि जैसे ही if वो हमारी कंडीशन को सूट करेगा तो हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नहीं करेगा तो हम ऑपरेशन को क्लोज कर देंगे. So what we can do is we can add a flow. So this is what we want, and we want if condition. So हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? So you can see a lot of new pages here. हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे. दिस इज इन द एक्सप्रेशन फॉर्म दैट इज कमिंग, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो द रिजल्ट इज 19/7/2025, द डेट वी सिलेक्टेड फॉर द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट. परफेक्ट. दिस इज व्हाट वी वांटेड. अब इसका मतलब ये है कि हम फिगर आउट करने वाले हैं कि अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 7 days फ्रॉम टुडे है, विच इज फॉर्म आज का डेट से 7 days के बीच में अगर प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट दिया है किसी क्लाइंट ने, देन वी कैन एक्चुअली take on that project. If it is after 7 days, we don't want to consider it as a project. This is the conditional logic we are working on right now. ये कुछ भी हो सकता है depending upon your client needs, depending upon how you want to think about it. This can be anything. This can also be modified कि if we are booked for the next 7 days, तो अगर उसके बाद का कोई प्रोजेक्ट आएगा, then only we can pursue it. So it can be a vice versa thing as well. So now you can see that this expression is written in basic JavaScript. अगर आपको basic JavaScript की knowledge है, तो आपको इसका idea होगा. What we want is equal to, not equal to. We want date and time exists, does not exist. So we want before or equal to. अगर आफ्टर एंड इक्वल टू होता तो हम जो मैंने अभी एग्जांपल आपके साथ शेयर किया उसके साथ वर्क कर जाता, हमें बिफोर एंड इक्वल टू चाहिए, एंड हमें इक्वल टू व्हाट. सो यहाँ पे भी हम एक एक्सप्रेशन वेरिएबल पे आ जाएंगे. व्हाट वील डू इज वील ओपन अप टू कर्ली ब्रैकेट्स. दिस इज ऑल्सो बेसिक जावास्क्रिप्ट. जब हम यहाँ पे आते हैं तो यू कैन सी वी गेट सम सजेस्टेड आइटम्स. सजेस्टेड आइटम्स में हमें काफी सारी चीजें मिल जाती हैं. व्हाट वी वांट इज द नाउ वेरिएबल. नाउ वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वी आर टेलिंग द सिस्टम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, कि हमें आज से लेके 7 दिन तक के ही प्रोजेक्ट्स परस्यू करने हैं, उससे आगे के नहीं करने हैं. सो व्हाट वील डू इज वील चूज दिस नाउ वेरिएबल. जैसे ही हम नाउ वेरिएबल चूज कर रहे हैं, सो यू कैन सी हमारी आज की डेट आ रही है 17/7/2025, which is today's date. You can see that. And हमारा अभी का टाइम भी आ रहा है. What we'll do is we'll add a dot, and what we'll do is we can add plus. अब you can see that यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल भी आ गया कि हमें कैसे इसको परस्यू करना है. So we need to first add the date and then we have to write days. अब हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आज से लेके 7 दिन तक का देखना है. Okay. That is what we want right now. We add a dot, we add plus, plus maybe write 7. This could be anything. This could be 2, 3, 4, depending upon your project. We'll add a comma, single bow, and we'll write days. Once we write this, you can see this has turned to green. That means what we have written actually worked. So, अब इसका इतने से एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि today is now plus 7 days is what we're looking at. Okay. यहाँ पे अभी हम एक चीज और करेंगे. We can add a dot here as well. And to date time is something कि हम फिगर आउट कर पा रहे हैं कि आज का डेट टाइम जो है उससे बिफोर प्लस 7 days पे अगर है, देन वी आर ओके टू टेक ऑन द प्रोजेक्ट. दिस इज द स्टेप वी आर लुकिंग एट. दिस इज द कंडीशनल लॉजिक वी क्रिएटेड. यही कंडीशनल लॉजिक हमें चाहिए है टू मूव ऑन टू द प्रोजेक्ट. वी कैन ऐड अदर कंडीशनल लॉजिक्स एज वेल. सो यू कैन सी वी कैन ऐड अनदर कंडीशनल लॉजिक. यहाँ पे सेटिंग्स हैं. सेटिंग्स में भी हम चीजें कर सकते हैं इफ यू वांट टू हैव अ लुक. तो दिस इज ऑल व्हाट वी कैन एक्चुअली प्ले अराउंड विद. सो what we'll do for right now is, यहाँ पे भी you can see the data in 3 formats by the way. So this is the input data. हम अगर इस कंडीशन को लगा के अपने स्टेप को एग्जीक्यूट करेंगे, you can see the step got executed and we could see that ये वाला जो है ये within the 7 day range है. Perfect. This is what we wanted and this is how we will function now. So अब हम क्या करेंगे? What we will do is we can go to the canvas back again and we have this now. तो on form submission से डेटा आएगा.
इफ कंडीशनल लॉजिक के पास जाएगा, यहाँ से वन आइटम के पास हमें देख रहा है कि हमें ट्रू आइटम हो गया है, कि मतलब ये 7 दिन के अंदर है। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी कैन एक्चुअली क्रिएट टू टाइप ऑफ फ्लोज, दो टाइप ऑफ फ्लोज हम, एक ट्रू वाला होगा, एक नो फॉल्स वाला होगा। पहले हम फॉल्स वाले को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम नो ऑपरेशन वाले टैब पे चले जाते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। परफेक्ट, दिस इज व्हाट वी वांटेड। दिस इज अ वेरी डायनामिक थिंग। अभी हम इसको ऐसे ही यूज कर रहे हैं, हम इसको और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे? So, see, we can do multiple things right here. What we can do is we can send an email to our internal team saying that, hey guys, we received a lead and it follows our conditional logic and we can pursue this. Perfect. This is one thing. Also, what we can do is we can add that data to a sheet so that हम एक unified CRM maintain कर ले कि हमारे पास जो भी leads आ रही हैं हम उनको एक data के through add कर लें। अगर 7 दिन के बाद भी है then we can pursue it again. So we can add two of these things. Earlier जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है उसमें मैंने सिर्फ मेल वाला पोर्शन दिखाया, बट वी व्हाट वील डू इज जस्ट टू मेक दिस वीडियो अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स कि हम इसको एक्चुअली रियल लाइफ यूज केस में ले जाएं. What we'll do is we'll add the Gmail module, we'll add the Sheets module as well. Okay, what we'll do is we'll go and action in an app and we'll look for Sheets. We have Google Sheets. Perfect. This is what you want. We don't want to create a sheet. We don't want to delete a sheet. What we'll do is we'll add a row. Append, no, 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 no. और ऑप्शंस कहाँ हैं यार? Append, clear sheet, clear, update row, no. Get rows in a sheet, no. Hmm. This is weird. We can sheets. Okay. Add a row. Okay. What we have to do is create a new credential. We'll use my Gmail as a, okay. Connection successful. Perfect. What we'll do is we'll write this, we'll give this a name. So you might also have to do it. AI. mm, mm, Okay. We will save this. We'll close it. Perfect. Okay. Sheet within a document. Append or update. Append row. Update row. Create a new sheet. Delete. Create a new row. Okay. This is what we want. Document. Okay. What we'll do is we'll create a new sheet first. That is what we want right now. So we'll go to Sheets. Create new sheet. What we'll do is we'll click on saying YouTube test build. हमने वहां पे क्या क्या हेडर्स डाले थे? We added name, phone number, email, project, start date. Perfect. This is what we wanted. What we can do is we can make it look like headers. तो हम इसको 15 पिक करके बोल्ड कर देते हैं. And what you can do is let's keep search. Let's give this some space. Right. Let's close this tab. What we can do is we can document formulas by URL, by ID. Let's see if it finds this. Okay, find nahi kar raha hai. What we can do is we can choose uh, the URL copy. Okay, what does it want? Okay, by the URL, the whole URL. Okay, not the form, the sheet ID. So we can choose the URL. Perfect. Sheet कौन सी चाहिए हमें? Sheet 1. Map each column manually. Okay, we want the name. What we'll do is we'll drag and drop name. Name के बाद हमें क्या चाहिए है? We want the phone number, so we'll drag and drop phone number. We will drag and drop email, and we'll drag and drop project start date. I hope you guys get an idea कि कैसे होगा. We just have to drag and drop. Once this is dragged and dropped, we can execute the step. Once we are executing the step, I hope this gets appended into the sheet, and perfect. We have it in the sheet. What we'll do is we'll do this, and you can see the data was mapped. This is what we want exactly now. Perfect. Let's go back. Once this is done, we want an Gmail trigger. Perfect. We want to send a message to the internal teams
by my account, and we want it to be sent to okay, Prabun Das dot okay, this account. Okay, the subject should be hello team. We just got a new lead. Perfect. We can choose plain text and we can say uh, hello team. Okay, we'll use it as an expression. Please look. Please have a look. Our new lead details, name, phone number, email, project start date. Perfect. Regards. Now what we'll do is we'll just start mapping. So name, drag and drop, phone number, drag and drop, email is something we'll drag and drop, give space, project start date, will something drag and drop. Perfect. Let's open up Gmail. I'm not going to see what's there. Let's execute the step first. Perfect, perfect, perfect. I hope this is sent. I'll wait on my phone to get it sent, then only I'll open it up. Yep, we have it. You can see this now. Hello team, we just got a new lead. Hi team, please look at our new lead. This is our new lead data. Regards. This email was sent by n8n. Looks perfect. This is what we wanted in the first place. What we'll do is we can go back to our canvas. So guys, I think this is the exact workflow we are talking about. Could be implemented in any system, any new business, any new business. We can implement this little workflow, which can actually save a lot of time and which can actually be a very high leverage product that we have created. अब we are done with our building. अब हम इसको actually में publish कैसे करेंगे? That is something we want to know. So you can see once we open that project form, we have a test URL and we have a production URL. What we'll do is we'll copy it. Once we have copied it, we'll make it active. Once we have made it active, you can see that we will paste that into our system. We have this production data. What we'll do is we'll use a different name. So what? Okay. Now what we'll do is we'll use two different project, two different form submissions. One is within the 7-day range and one is after the 7-day range. And we'll figure it out कि वो कैसे work कर रहा है. अगर वो within the 7-day range है, then we wanted to add it to the CRM and also send an email. And अगर वो नहीं है, तो we just wanted to go. So click to. Oh, this will be amit@company.com. Phone number is the same, सबका. Date is okay with in the 7-day range. Perfect. Let's submit this up. Second, इसका नाम है Rahul. Email is rahul@company.com. Phone number same use करते हैं सबका. And this guy is way out of the 7-day range. I hope this is out of the 7-day range. What we'll do is okay. Two forms submitted. Now what we'll do is this is our what we'll do is we'll click on executions and you can see that we got two forms submitted. We'll not open it up, we'll just see. Yes, Amit got appended to the sheet with all the data. We can see if we got a mail from in the name of Amit. Yes, hello team. Please have a look. Amit, this. Perfect. This is the second one. So if we can open it up, we see that the name was Rahul. And we can see that it went to the if condition and it went the no operation way. Perfect. So this is what we wanted in the first place. Anyway, thank you so much, guys. I think we are done with the first workflow. I would really insist on you to create the workflow with me. And मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर मैं बना रहा हूँ तो rather than watching the video, what you should do is actually open up a new tab and start building something like this for for yourself or for somebody else's business also, so that you can add value to the people out there. Anyway, आपका exposure भी बढ़ेगा if you can create something like this and sell it to other people as well. I would really insist on supporting the channel because as I am learning, I am giving that value upfront out there. So would really appreciate अगर आप लोग एक like and एक follow कर पाओगे and
Thank you so much for your time, and I hope we meet in the new video. Thank you so much, guys.